Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 5, Confusion of Semantic and Structural Criteria of Language to Literature. Topics to be covered in this session are countable and uncountable nouns, quantifiers or amount words, all and every, verbs, verb plus preposition or adverb, verbs such as let and make, verbs such as want and like, verbs such as enjoy and love. So let us start with countable and uncountable nouns. You already know that nouns in English fall into two broad categories of countable and uncountable nouns. Members of the two categories behave differently in the language. The distinction is between words such as cat, book, job, and on the other hand, if we see butter, petrol, bread on the other. So there is a bit difference here. The chief grammatical differences which exist between these two categories are as follows. मोस्टली हमने ये देखा है कि दो तरीके के नाउन्स हम फॉलो करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो दोनों बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. मोस्टली चीज़ों में हम देखते हैं काउंटेबल में कार्ड, बुक, जॉब, ये सब चीज़ें काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि कुछ चीज़ें जैसे कि बटर, पेट्रोल, ब्रेड, इन्हें हम एज अनकाउंटेबल ही ट्रीट करते हैं. A countable noun when used in singular refers to one object and takes the indefinite article before it. जैसे कि in the plural it refers to more than one of that object. जैसे कि अगर यहाँ देखें a cat, one cat, or you can say 7 cats. Uncountable nouns have no plural forms. Uncountable nouns की कोई भी plural form नहीं होती, जैसे कि butter, petrol, bread. ये सब चीज़ें अगर हम इनको बटर्स लिखते हैं या पेट्रोल्स लिखते हैं या ब्रेड्स लिखते हैं तो दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ आप देख सकते हैं कुछ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्योंकि कुछ चीज़ों में हम इनको जैसे मान लीजिए बैग या बैग्स हम यूज़ करते हैं, सूट केसेस यूज़ करते हैं, लाइक दे वर कैरिंग अ लॉट ऑफ सूट केसेस, दे वर कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज. बैगेज और लगेज को हम एस के साथ यूज नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. बैगेजेस या लगेजेस इज एंटायरली रॉन्ग. वहीं आप देख सकते हैं बैंगल्स, रिंग्स, नेकलेसेस, ये काउंटेबल्स के एग्जाम्पल रहते हैं. वहीं अनकाउंटेबल में हम इनको ज्वेलरी का नाम देते हैं और ज्वेलरीज जैसा कुछ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसे ही टूल या फिर टूल्स हम कह सकते हैं, और इक्विपमेंट इनका अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड रहता है. मील या फिर मील्स आप देख सकते हैं हम यूज करते हैं, और फूड अनकाउंटेबल में एग्जिस्ट करता है. लेटर या फिर लेटर्स हम लिख सकते हैं, और अल्फाबेट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन रहता है. काउंटेबल में आप जॉब वर्ड यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में वर्क. काउंटेबल में आप हाउसेस, बंगलोज, अकोमोडेशन यूज करते हैं, और अकोमोडेशन अनकाउंटेबल में रहेगा. वहीं शूज काउंटेबल का रहेगा. वी स्टॉक शूज ऑफ ऑल साइज, और शू और शूज वी स्टॉक फुटवेयर ऑफ ऑल साइजेस. आगे बात करते हैं क्वांटिफायर्स और अमाउंट वर्ड्स की. इन इंग्लिश द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स विच आर क्लासिफाइड एज क्वांटिफायर्स और अमाउंट वर्ड्स डिपेंड ऑन वेदर द नाउन दैट फॉलो देम आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सम ऑफ दीज क्वांटिफायर्स आर रिलेटेड इन मीनिंग, but they cannot be used with both countable and uncountable nouns. For example, many and much, a few and a little. There are also quantifiers such as all, some and none of that can be applied to both countable and uncountable nouns. So इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हम much, little words का यूज़ करते हैं, many, few words का यूज़ करते हैं. Little, there is a little of bread in the fridge. It is entirely wrong. हम मच और मैनी का यूज़ भी करते हैं फॉर मेनली नेगेटिव क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेस. पॉजिटिव के लिए हम इट इज़ यूजली बेटर टू यूज़ अ लॉट ऑफ. मच इज़ अनयूजुअल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. वी डोंट यूजली पे, वी स्पेंड मच मनी, बट वी डू यूज टू मच एंड सो मच इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. आई कांट ड्रिंक दिस कॉफ़ी, देयर इज़ टू मच शुगर इन इट. There is a difference between a few and a little and little. A few is affirmative and means a small number. Few is negative and means hardly any. So that means you can understand examples like, although Rita is not very sociable,
People like her and she has quite a few friends. Nobody likes Harry. He has very few friends. So now you must have understood कि किस तरीके से हम quantifier words का यूज करते हैं. इनके अलावा भी और बहुत सारे क्वांटिफायर्स रहते हैं जिनमें ऑल एंड एवरी का भी यूज़ होता है. इन पॉजिटिव सेंटेंसेस यूजुअली मैंने आपको बताया हम लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूजुअल अनयूजुअल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. वी डोंट यूजुअली से वी स्पेंड मच मनी. All and every works like all, everyone, everybody, everything are related in meaning, but you will notice that in their use they behave quite differently. Some of the points that you should remember, I would like to tell you here. All occurs with both countable and uncountable nouns, and every occurs only with countable nouns. जैसे कि आप example देख सकते हैं. All the bread in the box got spoiled, but not every bread in the box got spoiled. Every हम countables के साथ यूज करेंगे. All हम दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं as everyone or everybody takes a singular verb, the pronouns should be he or him, she or her, and the possessive adjectives his and her. So इस तरीके से आप examples यूज कर सकते हैं like they told us all about their holiday. या फिर हम देखिए sometimes you can use all to mean everything, but it is usually better to say everything. Like it was an awful trip, everything went wrong. We don't usually say all went wrong, but you can use all in the expression all about. They told us all about their holiday. We also use all to mean the only thing. All I have eaten today is a sandwich. So the only thing I have eaten is sandwich here. So I want to say that. So that I have used the phrase all I have eaten today is a sandwich. Like here, few more examples. Everyone enjoys it, don't they? Has everyone got their books? All requires a noun phrase after it. Every time आप देखेंगे कि all को कुछ ना कुछ noun phrase की ज़रूरत पड़ेगी. For example, you can say everybody enjoyed the party, but not all enjoyed the party. All people have enjoyed the party. Sometimes you want a noun phrase to complete the sentence. Next, we'll come to verbs. One of the most difficult areas in English where we tend to make the most mistakes is in the use of verbs. This is because it is on the basis of verbs that the pattern of the sentences are formed, and it is difficult to master the difference between the use of all these patterns. You will find here several verbs that are related in meaning but belong to different structures. In this section we have concentrated on such verbs. The list is not complete, but we want you to be conscious of usage. ये काफ़ी नहीं रहेंगे आपके लिए, बट थोड़ा सा आपको ये जान पाएंगे कि किस तरीके से इन्हें यूज़ करना है और कम से कम मिस्टेक्स कर पाएंगे. यहाँ हमने इन्हें क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैटर्न्स. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और एडवर्ब, verbs like let and may, verbs like want and like, verbs like enjoy and love. So let's see. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और एडवर्ब में अगर हम देखें तो सिमेंटिकली रिलेटिव वर्ब्स फॉलोड बाय डिफरेंट प्रेपोजिशंस. रिलेटेड वर्ब्स जो हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रेपोजिशंस इनमें आ रही हैं. आगे आप देख सकते हैं रवि वॉज ब्लेम्ड फॉर द थेफ्ट. रवि वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग. रवि वॉज चार्ज विद द थेफ्ट ऑफ नटराज स्टैचू. Here blame for, accused of or charged with have the same core meaning, but the preposition used after each is different. Like she pleaded with her captors to set her free. She appealed to her captors to set her free. There was an accident this morning, a bus crashed into a car. Or there was an accident this morning, a bus collided with a car. Semantically, related verbs, some followed by a prepositional phrase or others taking an object after them, that is intransitive verb and transitive verb. You already know that prepositions express a relation between the two things. One of these things is presented by a noun or noun-like expression. This follows the preposition and is called the object of the preposition. This sequence of preposition plus noun is called prepositional phrase.
Such a phrase can express varied kind of meaning such as location or direction in space, time or duration or manner. What you need to remember is that the preposition in a prepositional phrase is closely linked to its object and cannot be separated from it. Thus, a prepositional phrase forms a single unit. Like here you can see, he went to the bank for a loan. यहाँ आप उनकी direction बता रहे हैं. He approached the bank for a loan. Semantically related verbs where one is what may be called a prepositional verb and other is not. There are many verbs which are used with prepositions so that the verb and preposition function as a unit. They are sometimes called prepositional verbs and they are generally transitive. They are sometimes semantically related to other transitive verbs which are not used with a preposition. Like here we can give you examples. He asked for immediate repayment of the loan. Or we can say he demanded immediate repayment of the loan. Or we arrived at our destination in time. We reached our destination in time. We must always think of me as your friend, or you can say you must always consider me as your friend. Whenever I visit Delhi, I call on my old teachers. Whenever I visit Delhi, I visit my old teachers. So I have disposed of some of my old furniture, or I have sold some of my old furniture. So इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को. Semantically related verbs where one is followed by an adverb particle and the other is not. Here you can see the meeting was put off because of the death of one of the members. That means the meeting was postponed because of the death of one of the members, or the scheme didn't come off because of the lack of coordination among the members. So we can say the scheme didn't succeed because of the lack of coordination of the members. Or take off your school blazer, or we can say remove your school blazer. This report bears out my theory, or this report confirms my theory. We have drawn up our plans for the next year, or you can say we have formulated our plans for the next year. He got tired of his job and threw it up. So we can say he got tired of his job and left it. Geeta is leaving tomorrow and coming back on Thursday. Or you can say Geeta is leaving tomorrow and returning on Thursday. He is such a complex person, I can't figure him out. Or he is such a complex person, I can't understand him. So like this you can see a lot of examples where semantically relative verb one is followed by an adverb particle and the other is not. Next is verbs such as let and make. You already know the difference between finite and non-finite forms of the verbs. For example, am, was, are finite forms of the verb. That is, the form changes according to the tense and subject. Being and been are non-finite forms. The non-finite forms of verbs include the infinitive and the present and past participle. The infinitive is the form of the verb that can be used after other verbs and with to before it. For example, go in the sentence आप देख सकते हैं यहाँ पे. I can go, I want to go, it is necessary to go. So you can see when an infinitive is used with to, it is called to infinitive. When it is used without to, it is called a bare infinitive. We need not go there. Go is a bare infinitive here. Now you can see verbs like want and like. Verbs such as suggest, propose can be followed by that clause in sentences such as I suggest that you should go, or I propose that you should go. But you cannot say I want that you should go, I would like that you should go. Verbs such as want and like are not followed by that clause. Instead, they occur in a construction like I want you to go, I would like you to go. So
In this way you can form verbs. अब अगर हम enjoy और love की बात करें तो a verb such as love can be followed by a phrase beginning with a gerund. यहाँ पर आप देख सकते हैं verbal noun having the form of a present participle as well as by a, you can say, जहाँ पर to plus infinitive phrase का आप यूज़ करेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a verb such as love का आपने यूज़ किया which can be followed by a phrase जहाँ पे gerund से शुरू हो रहा है. Gerund means a verbal noun having the form of a present participle. और साथ साथ में आप to plus infinitive phrase की फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं. एक verb अगर हम देखें such as enjoy can only be followed by a phrase beginning with a gerund but not by a to plus infinitive phrase. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, सब्जेक्ट अगर हम कहें तो she, ट्रांसिटिव वर्ब enjoys, phrase beginning with a gerund, going to concerts. She enjoys going to concerts. She loves going to concerts. और अगर हम to plus infinitive phrase का फॉर्म करें तो she loves to go to concerts. But we cannot say she enjoys to go to concerts. So these are small things, but मोस्टली ये देखा जाता है कि हम लोग ग्रामर के पार्ट में मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो हैं हम वर्ब्स की में कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं पे ही पूरा सेंटेंस फोकस रहता है. और अगर वो ठीक से हमने नहीं मेंशन किया या उसका ठीक से फॉलो नहीं किया तो कई बार कंफ्यूजन हो जाने की वजह से सिमेंटिक और स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया की, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार हम काउंटेबल्स अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज़ करते हुए कई बार उन्हें गलत कर देते हैं. बैगेजेस उनको मान लेते हैं, या फिर लगेजेस आप देखिए, फूड्स, वर्क्स, अकोमोडेशंस, फुटवियर्स, दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स, जिनकी वजह से कई बार हम वर्ब्स को भी गलत फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं. इंग्लिश में क्वांटिफायर्स अमाउंट वर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल थिंग्स को प्रेजेंट कर पाते हैं. मच और लिटिल जो है वो मोस्टली मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे कि मच लक, लिटिल एनर्जी. वहीं मैनी एंड फ्यू जो है वो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के, जैसे कि मैनी फ्रेंड्स एंड फ्यू कार्स. विथ क्वांटिफायर्स लाइक प्लेंटी, लॉट्स, अ लार्ज नंबर, you require the preposition of, like you can आपको of की ज़रूरत पड़ती है, plenty of, lots of, large number of, पर आप little of, much of या many of यूज़ नहीं कर सकते हैं. much और many मोस्टली हम नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. we didn't spend much money, have you got many friends. तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं. और वर्ब्स के मामले में अगर हमने देखा, काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स में मैंने आपको बताया कि वर्ब्स जो है हम यूज़ करते हैं, और मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया रहता है ये. इसीलिए वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और एडवर्ब में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में ये इट इज़ क्वाइट कॉमन टू प्लेस अ प्रेपोजिशन आफ्टर सर्टेन वर्ब्स टू फॉर्म वेरियस पैटर्न्स इन द लैंग्वेज. समटाइम्स सच वर्ब्स आर सिमेंटिकली रिलेटेड टू अदर वर्ब्स विच रिक्वायर different prepositions. So there are also sets of verbs with that are related in meaning, where one of the verbs is followed by a preposition while another is not. There are few satisfactory rules that we have studied about this area. For the most part each item has to be learned individually. जहाँ हमने individually इनको study किया. Here I would like you to know, to be aware of these patterns from here, so that you can use them better later on. It would be a good idea to consult the dictionaries whenever you are in doubt, but be sure that you are using the right form of the verb in your sentences. Do it yourself questions for you. Some few questions I am giving you here, जहाँ पे complete these sentences with all, about, everything, और everyone और everybody. इनका यूज़ करते हुए आपको ये सेंटेंसेस फिल करने हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस. इन दिस स्मॉल विलेज एवरीवन नोज डैश एल्स. आई कांट लेंड यू एनी मनी डैश. आई गॉट इज ₹10 and I need that myself.
Sita is very popular dash likes her. I didn't spend much money at the shops dash I bought was a toffee. So that's all for this session. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.